Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today I will tell you about the difference between rotational intensity and cropping intensity. Most of the students think that rotational and cropping intensity are same, but it is wrong. Both are entirely different, and generally concept based questions are asked in competitive examination. We should know what are these intensity and what is the main difference between rotational and cropping intensity. There is also a lecture uploaded regarding this rotational intensity and cropping intensity. You may watch these lectures in the playlist in numericals. There are different type of numerical based on rotational intensity and cropping intensity. Here today I will clarify about the difference, what is the basic difference between these two intensity. Actually, rotational intensity tells about the rotation. Now, which type of rotation? This is crop rotation. So, it is related, rotational intensity is related with the crop rotation, and a crop rotation is followed in the field. Which type of crop is grown in Rabi, Kharif and Zaid season, there is a particular crop rotation, and according to crop rotation this rotational intensity is calculated. And the most common crop rotation in our country is rice, wheat, and other maybe rice and maybe maize, wheat. These are double cropping system. Here two crops are grown. Another system, maybe there is only one crop, rice, then it is kept fallow. Other maybe that the field is kept fallow in Kharif season and mustard is grown, or sorghum is grown in Rabi season. Similarly, there may be a triple cropping system like rice, pea and spring maize. This is triple cropping system. So, there may be different type of cropping system. Generally, double cropping system is followed, and this crop rotation is calculated on the basis of two parameter. First parameter is number of crops in the rotation. How many crops are grown in rotation? If it is double cropping system like this, two crops are grown. If we see this cropping system, only one crop is grown. If we look this cropping system, three crops are grown. So, this is the basic parameter for the calculation is first count number of crops in rotation. Number two, what is the duration of the rotation? And we look, all these rotations are 1 year. So, second parameter is duration of rotation. Then on the basis of rotational intensity Ri, if I write rotational intensity as Ri is equal to number of crops, this is formula, number of crops divided by duration of rotation. So, in these examples all rotations are of 1 year, and 2 year rotation may be rice, wheat, maize, then mustard. Then this is 2 year rotation and 4 crops are grown. So, this is the basic calculation. Now, this is only the calculation part. Later on we will interpret what is the meaning. Okay, number of crops, suppose we take the example rice, wheat, number of crops 2, duration 1, and then multiply it by 100 to convert it into percentage. So, number of crops 2, duration 1 into, this is 200. Okay. Similarly, for this rotation Ri, for this one, number of crops 1, duration 1 into 100, that is 100%. And for this example rice, wheat, mustard, maize, number of crops 4. So, Ri is equal to number of crops 4
and duration is 2 year. Divided by 2 into 100, that is 200%. So we see that RI may be 100%, maybe 200%, maybe 300%, or even maybe 150%. Different type, maybe 133%. So this percentage indicates how many crops are grown in 1 year. For example, if it is 100%, then 100% means only one crop is grown in 1 year. If it is 200%, it means 2 crops are grown in 1 year. If it is 300%, it means 3 crops are grown in 1 year. But now, if it is 150%, then what does it mean? So first, rotation intensity indicates how many crops are grown in 1 year. रोटेशन इंटेंसिटी से हमें यह पता चलता है कि एक साल में कितनी क्रॉप ग्रो की जा रही है. 100% मतलब 1 क्रॉप, 200% मीन्स 2 क्रॉप्स, 300% मीन्स 3 क्रॉप्स. बट इफ रोटेशन इंटेंसिटी इज 150%, ओके, देखिए 100% में कितना था? 1 क्रॉप in 1 year. 200 means 2 crop. So it means 150% means 1.5 crops in 1 year. Rotation intensity actually indicates the number of crops in 1 year by formula, and 1.5 crop is not possible. So go for twice and thrice. तो इसको डबल कीजिए, फिर ट्रिपल कीजिए. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हम इधर भी 2 से कर दें, इधर भी 2 से कर दें. नाउ इट इज 3 crops and it is 2 year. It means 150% means 3 crops are grown in 2 years. So this is the meaning of rotation intensity. तो अगर ये पॉइंट में है तो इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करके, जब तक ये होल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो 1.5 क्रॉप. क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन डेसिमल और फ्रैक्शन. So that's why we multiplied by 2. Suppose RE, rotation intensity, is 133%. Rotation intensity is 133%. So in simple terms, in mathematical terms, it indicates 1.33 crops in 1 year. And 1.33 is not a whole number. It is, crops cannot be in decimal. So multiplied by 2, then it is 2.66 crops. It will be multiplied by 2 crops in 2 years. It is not also possible. Then multiplied it by 3, 1.33 into 3. So 3 crops in 3 years. And this is 3.99 is approximate 4. So it means 4 crops in 3 years. So this is the meaning. This is the meaning of rotation intensity. So now it is clear that rotation intensity indicates number of crops grown in 1 year. If rotation intensity, फिर से इसको देख लेते हैं. If rotation intensity 100% means, इसको 1 कर लीजिए, 1 crop in 1 year. Rotation intensity 200%, it means 2 crops in 1 year. 300% means 3 crops in 1 year. Okay. Now if it is in not whole number, it may be 150%. Now what does it mean? It means 1.5 crops in 1 year. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2, 3, 4, 5 से, जब तक कि होल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए. तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट इज 3 क्रॉप्स इन 2 years. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 150%, दैट 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन 2 years. If it is 133%, then it is 1.33 crops in 1 year. Okay, then multiplied it by 3, then it is 9.3 means approximate 4 crops.
4 क्रॉप्स इन 3 years। हमने 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, देन इट बिकम्स 3.99 approximate to 4 crops. So rotational intensity indicates how many crops are growing per year. While cropping intensity, ये तो rotation intensity is related with the crop rotation, okay? And cropping intensity is related with the how much area is sown more than once. So it is related with the what is the net cultivated area and what is the gross cultivated area. This is the basic difference. This rotation intensity is related with the crop rotation and cropping intensity is related with the area. What is the area available with the farmer and how much area is sown more than once, means how much area is sown in Kharif, how much area is sown in Rabi and how much area is sown in Zaid. Then this cumulative area makes the cropping intensity. इसको हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं। Suppose a farmer has 1 hectare area, okay, and this area in Kharif he sow the crop in 1 hectare and in Rabi he sow in 1 hectare, okay. So what is the total area? 2 hectare. So he sows 2 hectare area in 1 year and actually he has 1 hectare area. तो 1 हेक्टर में उसने खरीफ में कुछ राइस लिया और 1 हेक्टर में रबी में उसने वीट लिया। तो नाउ इट इज ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया, दिस इज ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया इज 2 हेक्टर एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया इज इक्वल टू 1 हेक्टर। So cropping intensity, it write as CI is equal to gross cultivated area divided by net cultivated area into 100, okay. Gross cultivated area 2, it is 1 into 100, that is 200%, okay. Suppose rotation is rice wheat, he takes rice in Kharif and wheat in Rabi, okay. So rotation is rice wheat. Now in this case rotation intensity, number of crops 2, year 1 into 100, 200%. So both are same, rotation intensity is 200% and cropping intensity is 200%, but the interpretation is different. Here it indicates 2 crops in 1 year and 200% means, इसमें से 200% means इसमें से 100 घटा दीजिए क्योंकि 100 उसके पास नेट है, मीन्स 100% एरिया इज सोन मोर देन वंस, मतलब उतना ही एरिया को दोबारा बोया जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सपोज क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 150%, सपोज 150%, ओके, इट मीन्स -100 कर दीजिए, दैट इट मीन्स 50% एरिया is sown more than once. So how is it possible? Suppose 1 hectare area he has in rice and because of limitation of water he sows only 0.5 hectare area in रवि सीजन में उसके पास पानी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बहुत कम फैसिलिटी है, इस कारण से वो 0.5 हेक्टर एरिया में ही मान लीजिए वीट को ग्रो करता है। तो उस केस में इन दिस केस ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया इज 1.5 हेक्टर, नेट कल्टिवेटेड एरिया उस पर जो है 1 हेक्टर है। नाउ इट इज 1.5 अपॉन 1, दैट इज 150%, बट द रोटेशन इंटेंसिटी इज सेम, राइस वीट। Here rotation intensity does not take care of how much area is sown. रोटेशन इंटेंसिटी ये नहीं देखती कि कितने एरिया में बोया गया है, बस बोई गई है क्रॉप, ये देखता है रोटेशन इंटेंसिटी में। हम ये कंसीडर करते हैं क्रॉप बोई गई है, कितने एरिया में बोई है इसको कंसीडर नहीं करते, बट क्रॉपिंग इंटेंसिटी टेक केयर ऑफ एरिया, इन हाउ मच एरिया क्रॉप इज सोन, ओके। सो इन दिस केस देखिए रोटेशन इंटेंसिटी सेम, बट नाउ CI इज चेंज, CI इज 150%। 150% मीन्स 50% एरिया इज सोन मोर देन वंस, बिल्कुल क्लियर है। 50% एरिया, 1 हेक्टर का 50% एरिया कितना हुआ 0.5,
तो देखिए 0.5 हेक्टर एरिया को ही दोबारा बोया गया है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 300%, अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी 300% है तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 300%? If rotation intensity is 300%, it means 3 crops are grown in 1 year. देखिए इसको समझिए। If rotation intensity is 300%, it means 3 crops are grown in 1 year. But if cropping intensity is equal to 300%, it means subtract 100%, that is 200%. It means 200% area means double area is sown more than 1, कि एक बार से ज्यादा 200% एरिया को बोया गया है। अब ये चाहे रबी में बोया हो, चाहे जायद में बोया हो, या कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ली गई है। सो दिस इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी विच इंडिकेट हाउ मच एरिया इज सोन मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा कितनी बार हमने एरिया को बोया है। मान लीजिए एक ही सीजन में बोते हैं हम। इफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 100%, CI is 100%, it means crop is sown is only in one season, केवल एक ही सीजन में बोई गई है। If cropping intensity is 300%, तो उसको हमने जो एरिया था उसको डबल करके बोया है, और 100% तो था, तो इस टोटल मिला के 300% हो गया। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% मीन्स कि एक ही सीजन में बोया गया है। हाउ इज इट पॉसिबल? सपोज राइस फैलो सिस्टम इज फॉलोड इन 1 हेक्टर एरिया। अब यहां देखिए खरीफ में तो इन खरीफ सीजन राइस इज सोन, बट इन रबी सीजन इट इज फैलो। ओके, सो ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया, नेट कल्टिवेटेड एरिया 1 हेक्टर, ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया 1 हेक्टर। सो CI इज इक्वल टू GC अपॉन NCA, दैट इज 1/1 into 100. It means if CI is 100%, it means definitely one season is fallow. Only crop is grown is only in 1 season. तो ये इसके इंटरप्रिटेशन है जो हमको समझने पड़ेंगे क्या इसका मतलब है। अगर CI 200% है तो इसका मतलब दोनों सीजन में क्रॉप को ग्रो किया गया है, मतलब पूरे एरिया को दोनों सीजन में ग्रो किया गया है। जितना एरिया था उसने पूरे एरिया को रबी में ही बोया है और खरीफ में भी बोया है। इफ इट इज 300%, इट मीन्स कि जो उसका एरिया है उसने 100% एरिया खरीफ में भी बोया, एंड 100% एरिया इन रबी सीजन, एंड 100% एरिया इन जायद स्प्रिंग समर सीजन। कोई शॉर्ट ड्यूरेशन उसने वेजिटेबल लिया होगा, तो ट्रिपल क्रॉपिंग सिस्टम वहां रहा होगा। तो दिस इज द मीनिंग। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट CI इज नेवर मोर देन रोटेशन इंटेंसिटी। कल्टीवेशन ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी कभी भी रोटेशन इंटेंसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। आप इसको एग्जाम्पल से कई बार करके देख सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आइदर इक्वल टू रोटेशन इंटेंसिटी और लेस देन रोटेशन इंटेंसिटी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताया था उससे पहले कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाज 150% एंड रोटेशन इंटेंसिटी वाज 200% इन राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम व्हेन wheat was sown only in 0.5 hectare area, okay, and rice was grown in 1 hectare area. So in this case it is 150%, but rotation intensity 2 crops, so it is 200%. So this is the difference in rotation intensity and cropping intensity. So rotation intensity indicates how many crops are grown in 1 year, and rotation and cropping intensity indicates how much area is sown मोर देन वंस, मीन्स ट्वाइस थ्राइस, कितनी बार उसको बोया गया है, फार्मर ने अपनी फील्ड को कितनी बार बुआई में यूज किया है। दैट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सो ये एक मैंने बताने की कोशिश की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन इंटेंसिटी एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, रोटेशन एंड क्रॉपिंग. So rotation intensity is related with the rotation and cropping intensity is related with the area. For a farm, for a region, for a district or for a country, a number of rotations are followed. एक कोई district हम ले लें या कोई हम state ले लें, a number of crop rotations are followed. So for a particular rotation, rotation intensity is calculated. लेकिन एक स्टेट की हम पर्टिकुलर रोटेशन इंटेंसिटी नहीं बता सकते, किसी कंट्री की हम रोटेशन इंटेंसिटी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रोटेशन है.
लेकिन हम किसी कंट्री में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में वी कैन count how much area is sown in Rabi, how much area is sown in Kharif, and how much area is sown in spring season. Then we can add total area and divide by net cultivated area. Then we can calculate cropping intensity. So this is the reason that for a country, for a region, or for a district, for a state, cropping intensity is calculated. तो ये एक मैंने बताने की कोशिश की, what is the difference between rotation intensity and cropping intensity. Thank you very much.